Burn. Yeah, correct. When you burn the public property. Burn. Okay, fair enough. Yes. Then we had what something for being very poor. I can't hear you. Okay, am I audible now? Yes. Okay, so we also did the word for being poor. When you are not rich, the state of being poor. Poor. Yes. So what was the word for that? The word was penury. We did the word, right? Yes. Yes. Penury. Yeah, penury. The word was penury. We also did the word for believing in God. If you believe in God, we did few words, like we added some suffix in it. Yes. We did three words vocabulary. Right. Yes. For first was arson. Hmm? Second was penury. And third was something lathe. Uh-huh. The person who believes in God. Yeah, that word was theist. Yes. Theist. We also did atheist. Atheist, we said, is one who doesn't believe in God. Yes. Yes. So we had said that if we come down with the word as theist, so we said this ist word when we are adding is for the person, right? Yes. Yes. The person who is in that profession. Very good. A person who's in that profession or who believes in that, who performs Yes. that. Very good. We also did the word, uh, okay, we didn't do, we had just discussed the word pandemic for the word pan. Pandemic, um, which Huh? is surrounded in 360 degree. Right. So if I say pantheist, Pantheist, hmm? a person who is uh, whose thoughts are surrounded in 360 degrees. Well tried though. I mean, admire that. He came down well with the combination, but he has not thoughts surrounded, but he said he believes in the God all over the world. I mean, theist is what? Theist is where a person believes in God. So if I say pantheist, means he believes in God with, throughout all over. That is where we Oh, had come down. yes, okay. Okay, no problems. So we'll do certain more words today, which are going to be a bit tougher ones. Some will be easy. All right? I don't Yes, know, the yes. other girl has not joined us today. हमने इतना भी नहीं बोर किया था यार. Okay, the word which I want you all to remember is abhor. ABHOR. Can you see the screen, right? Yes. ABHOR. Abhor. Uh, I abhor the feeling of being surrounded by corona. So any wild guess what the meaning can be? To take care. Uh, I abhor the people who lie. Hate. Exactly. Hate. So this word abhor basically means to hate or detest. When you dislike something, when you hate something, that is where the word comes down as abhor. बहुत अच्छा निमोनिक बिल्ड कर सकते हो अब और नहीं झेल सकते Yeah, yeah. राइट सो इफ यू बिल्ड अ Hmm. निमोनिक लाइक ना भाई इतना परेशान हो गए कि अब और नहीं झेल सकते सो दैट इज वेयर यू कम डाउन विद हेट और डिसलाइक Okay. okay the word is alacrity ALACRITY. Excuse me, today my mouse is a bit dicey. Yeah, ALACRITY, alacrity. Okay, Siley has joined us. Okay, hi Siley, I think you've joined. Yes, ma'am. Cool, how are you doing?
मैम. Good. अरे यार इतने दुखी दुखी good. चलो कोई बात नहीं. Okay, we just started with two words. We did the first word was abhor. Can you see the screen better? Yes, ma'am. Okay. So we just started with the word abhor. A-B-H-O-R. Abhor. So abhor means. Yes, Panani, what happened? बताओ. Abhor means. I don't know, ma'am. Okay, no problem. Abhor is to hate or dislike. Okay, ma'am. Okay? तो हमने उसके लिए निमोनिक बोला है कि अब हमें और पसंद नहीं है. अब और झेल नहीं सकते. So that is abhor. The next word we just started is alacrity. Yeah. Can you tell me the word alacrity? Any one of you? No, I can't. Okay, if I say, I'm full of alacrity to meet you all. Excited? Very good. Excited, eagerness, willingness. When you want to do something with full happiness or eagerness, that is where the word comes down as alacrity. Okay. एक बैच थी व्हेन आई वाज टीचिंग देम, तो ऐसे हम लोग न्यूमोनिक बिल्ड कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा न्यूमोनिक बिल्ड किया. आई रियली लाइक दैट. उन्होंने बोला अल्लाह ने सिटी बहुत दिल से बनाई है. And that is how they remember alacrity. So I just want to share that. So it's a good way to remember alacrity. Alacrity means willingness, eagerness, or it's something when you're full of speed to do something. Okay, याद रहेंगे ये दो words? हमने Yes, अभी तक ma'am. क्या किए? Yes. Very good. We started with abhor. We said abhor is all about hate or dislike. Second word we said is alacrity, which basically means willingness, eagerness. Okay. Next word is amiable. A-M-I-A-B-L-E. Please excuse me for the handwriting today. Amiable. A-M-I-A-B-L-E. If I give you a sentence, China is not at all amiable with India these days. Not friendly. Very good. Not friendly. So amiable means friendly. This word is adjective. Able लगा है ना देखो उसमें. ठीक है? हाँ. जिन words में Amiable means not friendly or friendly. friendly. Oh, Amiable means friendly. oh. Amiable behavior helps us to grow. So friendly behavior helps us to grow. Yes, ठीक है, yes. ये एडजेक्टिव रहेगा बिकॉज उसमें एबल लगा है. ज्यादातर वर्ड्स व्हिच हैव अ सफिक्स ऑफ एबल दे आर मोर ऑफ एन एडजेक्टिव. केपेबल, रीचेबल. ठीक है, Repressible. वेरी गुड. ओके, we come down to the next word is appease. A-P-P-E-A-S-E. Appease. uh, it's very difficult to appease the family members of the soldiers who just died or who just martyred. To feel the same what they are feeling. Mm, okay, I'll give you another statement. Uh, you can never appease a person or someone who's bound to live a regretful life. Satisfy. Yeah, closer. Satisfy, calm, किसी को शांत करना, satisfy करना, rather it is a correct word, not closer. It is actually a correct word. So appease means to calm someone or satisfy someone. तो बहुत इजी है ये वर्ड याद रखना. आप उनको प्लीज नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट मेक देम हैप्पी, यू कैन नॉट सैटिस्फाई देम. दैट इज वेयर द वर्ड कम्स डाउन. अपीज. यू कैन नॉट प्लीज देम. राइट, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? Yes, सो वी ma'am. Yes, सेड yes. वेरी गुड. Yes. Abhor, we said abhor. Abhor is Hate. 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 Very good. Alacrity. Excited or Excited. willingness to meet someone. Very good. Amiable. Friendly. Friendly. Correct. Appease. To calm Satisfy. someone. Yeah, to calm or satisfy someone.
Okay. We'll come down to the next one, and that is arcane. ARCANE. This is A, huh? Today my mouse is giving me a lot of pain. Okay. It's ARCANE. Arcane. Uh, the arcane mysteries of the Egyptian pyramids is still unknown. Unknown. Basically secret, something which is unknown or known only by few people, that is called as arcane. Right, it's secret or unknown something. Right, okay. We come down to the next word, and that is Everise. AVARICE. Everise. Uh, we all have the Everise to earn a lot of money. Greed. Very good. Greed. Avarice is greed. When you very much, into excessive greed, you can say that is called as avarice. So again, you can remember it in a very easy way. तुम लोग को याद होगा या पुरानी कभी movies देखी होंगी, वो stock hold करके रखते हैं, ठीक है? तो जिनके पास बहुत ज़्यादा stock है, उन्होंने राइस का stock hold करके रखा है, so that आगे जाके उसको और ज़्यादा high rate में बेचेंगे. Right, so that is the greed. So we'll remember the word avarice with rice. Okay, so that is where the word comes out. Arcane, arcane we said is Unknown. Secret. Secret. very good, secret. And avarice we said is excessive. Extreme. Very good, extreme greed or excessive greed. Okay, I'll take one more word for the day, and that is brazen. 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 If I say Kangana Ranawat's statement is brazen, we should admire her for that. Truthful. Okay, closure. She's quite brazen. She doesn't keep her inside. Extrovert. Correct? She's very bold. She's very brash. She's very clear. So that is where the word comes down as brazen. Okay, truthful, honest, blunt. ऐसा कह लो. Okay, बहुत ही bold है. Very bold. Excessively bold. So that is where the word comes down as brazen. Okay, so we did somewhere around 5 and 6 words. So can you tell me the words? अच्छा कोई बुक में नहीं लिखेगा, बिना बुक में देखे बात करिए, इसलिए आई वी रीच्ड फ्रॉम हियर टू. हमने क्या क्या वर्ड्स किए? एक हमने वर्ड यूज किया टू सैटिस्फाई समवन. Appease. Very good, very good. Appease. And if we are friendly, then who I am? ओए चीटर्स, देखना नहीं इधर उधर. अगर मैं फ्रेंडली हूँ तो what am I? What words did we do? हमने कुछ चाइना का एग्जांपल लिया था. Amiable. Closer. Amiable. 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 So amiable is friendly. And when you do something very willingly, Alacrity. very good, alacrity. Something which is known only by few, Arcane. correct? Arcane. When I'm very greedy, Avarice. correct, avarice. And I'm very bold. Sorry. I'm very bold. Bold. Brazen. Very good. So we're missing one word. Yeah, we missed one word. Abhor. Abhor. Yeah, abhor. Very good. We used the word abhor, which is to hate or dislike. Okay, very quick. What was alacrity? Excited.
Very good. Amiable. Friendly. Friendly. To satisfy someone. Appease. Appease. Very good. Arcane. Secret or Unknown secret. something which is known to few people. Very good. Brazen. Bold. Bold, truthful, clear Alright. about something. Correct. Okay. We missed Everise. Sorry? Extreme Everise. greed. Very good. Extreme greed. Grade, yes. So याद रहेंगे ये word? Yes, ma'am. Very good. Okay. In the last session, we did certain noun के ऊपर से हमने किया था for spot the errors और हमने noun पे शुरू किया था. So do you remember anything about noun? क्या क्या डिस्कस किया था हमने क्लास में? We Last. do we did types of noun. Okay. In that we particularly did countable, uncountable, material. Hmm. Common, proper, abstract, and collective. Very good. So what is abstract noun? Abstract is which describes. It doesn't describe, but it is about the feelings. You cannot see it. You can just feel it. Feel it. Very good. Very good. Feelings and emotions, that comes down in abstract noun. Then we discussed more about being something countable and uncountable. Yes. So we discussed that if it is countable, we use article or an, right? हम Yes. Yes, countable के yes. साथ article or an लगाते हैं. And if it is uncountable, we are not going to use article or an. And We took the example of advice. ना हमने बोला था she gave me an advice. So we said हम an advice नहीं बोल सकते हैं. A piece of advice. Very good. She gave me a piece of advice. We also discussed something about possessive case, जिसमें हम apostrophe s लगाते हैं. Yes. Alright? तो उसमें क्या था? uh, 2 बार apostrophe s नहीं दे सकते. हाँ, double possessive case Double use नहीं कर possessive. सकते. Alright? फिर हमने बोला था हम दो noun में apostrophe s कब लगाते हैं? And लगा है बीच में, and then there are two nouns or more than two nouns. When a thing belongs to both of them. तब दोनों में लगाएंगे. नहीं, सिर्फ एक ही में. With हाँ. and in between. If with and in between, if it belongs the same thing to both of them, तो हम सिर्फ लास्ट वाले में लगाएंगे. अगर उन दोनों को अलग अलग चीजें बिलोंग करती हैं तो हम दोनों के केसेस में पॉजिटिव केस वर्क करेंगे विद एंड इन द मिडल. यू रिमेंबर वी डिस्कस दैट रूम, एक रूम वाला केस था तो हमने इस पे वर्कआउट किया था. Yes. ओके. We did example of my friend's, हाँ, वो डबल my पॉजिटिव के father's लिए. friend's son. हाँ, राइट. वी डिड माय फादर्स फ्रेंड सन scored well in Scored well exams. in exam. Right. The son of my father, the son of Of my my father's friend. father's friend score well in हाँ, exam. ये डबल पॉजिटिव वाला केस था. Yes. फिर हमने डिस्कस किया था, वी आल्सो डिस्कस की अगर हाइफेनेटेड वर्ड्स है वो हमने किया था. देखो, पासर बाय. Yeah. सो व्हाट डिड वी डू इन दिस पासर बाय? We did passers by. हाँ, सो हमने क्या बोला था? पासर्स में लगेगा प्लूरल. लाइक वी हैड डन द एग्जांपल ऑफ कुछ मदर्स इन लॉ, राइट? Yes. Okay. So now what we'll do is today we'll continue with these noun and I'll give you certain questions today. तो हम spotty errors के ऊपर workout करेंगे. So we will have three things together. Pronoun भी बीच में आएगा. Pronoun याद है? He, she, it. Yes. Yes. ठीक है? And articles we've already discussed. So you might come across certain rules. तो हम वो rules भी साथ में discuss करते चलेंगे. ठीक है? Yes, ma'am. Excuse me.
Okay, can you see the screen better? Yes. Yes. So as the topic suggests, we're going with some questions relevant with noun, pronoun and articles. Article. Okay. ये मोर ऑफ इजी क्वेश्चंस है, कुछ इजी क्वेश्चन होंगे, कुछ एकदम बच्चों वाले होंगे, बट द रीजन वी आर डिस्कसिंग दिस इज क्योंकि जब आप सीटी एग्जाम्स, एनमैट एग्जाम्स, स्नैप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे से कुछ क्वेश्चन इसी बेसिस पर आएंगे. ओके. Sure. Yes, ma'am. ऑलराइट, हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन. अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना ए बी सी डी, तो इसका मतलब है आपको मार्क करना है कि ए में एरर है, बी में एरर है, सी में है, डी में है, एंड इफ यू फाइंड नो एरर देन इट शुड बी ई. कुछ भी लग रहा है एरर है कहीं पे? Okay, what is the sentence trying to tell you, beta? कि हमने कोई भी intimacy, what do you mean by the word intimacy? Intimate relationships. So what do you mean by intimacy? Close. Close. Ah, very good. Close. So it's trying to tell you that we should not have a close relationship or friendly relationship With liars. with liars. तो इसमें कोई error लग रहा है? या तो लग रहा है या तो नहीं लग रहा है, इतना क्या सोच रहे हो? कोई बात नहीं, तुम लोग बहुत दूर बैठे हो, पार्टिंग दे नहीं पाओगे, अदरवाइज मैंने ले ली होती. Ma'am, intimacy is a abstract noun. Yes, it is. And उसके आगे any लिखा है. नहीं, वो चलेगा, that's not a problem. Any means कोई भी. Okay. I think it's correct. No error. Okay, अगर intimacy का error छोड़ दें तो कोई error नहीं लग रहा है, right? Yeah. Alright, देखते हैं किसको क्या मिलता है. अफसोस, गलत जवाब. You remember that day we discussed something called as collective noun. याद है? Yes, ma'am. Okay. Yes, a group of liars. हाँ, तो हमने बोला ग्रुप ऑफ लायर्स. अभी ग्रुप तो आप किसी भी इसके भी साथ लगाओगे तो वो नहीं चलेगा, तो हमें ग्रुप की जगह पर क्या चाहिए? कॉन्फेडरेसी ऑफ लायर्स. ऑलराइट, we don't say a Yeah. group of liars, we say a confederacy of liars. So sometimes in exam there may not be a typical grammatical error, but there may be an error of collective noun, the way they use that. Okay. Yes. आप लोगों को एनालॉजीज पता है बेटा क्या होता है? एनालॉजी, एनालॉजी इज द क्वेश्चंस जहाँ पे वो आपको रिलेशंस देते हैं. फॉर एग्जांपल आई से हॉट, कोल्ड. Okay. Yes, So what's ma'am. the relationship between the hot and cold? Opposite. Opposite. So I'll give you dark. Right. Very good. Bright. So similarly, in many cases, you would get analogies. CT exam में analogies बहुत important है बेटा. तो वहाँ पे आपको ये collective noun के analogies आती है. For example, if I take now here itself, I'll give you confederacy, liars. So that means what is confederacy? A collective noun for liar. If I give you bouquet, flowers, Flowers. right? So bouquet is a Yes. collective noun for flowers. Flowers. Flower. So can you give me a collective noun for crow? तो मान लो उन्होंने ऐसा दिया, कॉन्फिडेंसी लायर्स, फिर उन्होंने दिया डैश क्रो, तो मतलब हमें क्या ढूंढना Flock. है? Flock. ओके, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है फ्लॉक, उन्होंने दिया है आपको मे बी मर्डर, and they have given you bunch. क्या मार्क करोगे?
Okay. You would Murder. be absolutely correct. It is a murder of crows. सुनने में बहुत weird लगता है, but that is what the actual answer is. It is a murder of crows. तो जब तुम लोग कलेक्टिव नाउन करोगे बेटा, आप लोगों को बुक्स नहीं मिली होंगी ना अभी, या मिल गई है? मिल गई है। सही है। मिली है। तो आप लोग की सीटी बुक्स में आई थिंक इट्स अ ग्रामर बुक और वोकैब बुक, उन दोनों में से किसी एक बुक में पीछे लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स दिए होंगे। ओके। Okay? और उसमें अगर नहीं भी दिए हैं, so even if you search on Google and you know type it out as collective nouns, you will get a long list of collective nouns. Alright? उसमें क्या है, आप लोगों को थोड़े से collective nouns याद करने पड़ेंगे। तो याद कैसे करोगे, रट्टा नहीं मारना है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टोल्ड यू मर्डर इज यूज्ड फॉर क्रोस, तो उसके अराउंड एक स्टोरी बिल्ड करो। बहुत प्यारी नींद में हो तुम लोग सुबह सुबह, ठीक है, एकदम ठंड का मौसम है, सुबह सुबह नींद में है, और 2-4 क्रोज आके आपकी बालकनी में, आपकी विंडो के सिल पे बैठ के यू नो नाइस म्यूजिकल साउंड निकाल रहे हैं, तो आपकी इच्छा क्या करेगी? मर्डर। मर्डर कर। एब्सोल्युटली करेक्ट, मर्डर कर देने की। सो हाउ डू यू रिमेंबर दैट? अ मर्डर ऑफ क्रोस, क्रोव्स। राइट? सो ऐसे अगर तुम लोग स्टोरी बिल्डअप कर लोगे बेटा उसके आसपास, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। ऑलराइट, सो यस। we'll remember for liars we यस। have यस मैम, confederacy. कॉन्फिडरेसी। राइट, गुड, क्लियर हुआ? इसमें एरर क्या है? तो कई बार ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा, एक वर्ड का एरर होगा या उसकी मीनिंग से रिलेवेंट एरर होगा, ठीक है? यस। यस मैम। ओके, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई एरर लग रहा है? ऑप्शन सी। ओके, यू आर फार बेटर, इसमें एरर लग रहा है। यस मैम। ओके, एरर क्या लग रहा है? मतलब क्या होना चाहिए? यू आर बेटर देन हिम, फार नहीं होना चाहिए ऐसा? हाँ, मतलब फार और बेटर एक साथ में, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। अच्छा नहीं लग रहा। उसका नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है फार बेटर। Yes, Mary, what's your call? Same, I agree with Siley. You agree with Saili? Yes. Okay, if I say I am quite better today, तो उसका मतलब क्या हुआ? क्वाइट बेटर मतलब अब कल से आज कल ठीक से है। आज बेटर। हाँ, कल से आज बेटर है, तो फार बेटर में अच्छा लग रहा है। Okay, let me show you the answer first and then it'll come down. कुछ एरर समझा? Yes. यस मैम। याद है हमने ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट लास्ट टाइम किया था सेशन में, हम लोग कुछ ऐसी स्पॉट दी एरर्स या इस पर डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था शी इज टॉलर दैन मी। तब आई थिंक मैत्री कनेक्टेड मी, शी सेड कि मैम मी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शी इज टॉलर दैन आई एम, है ना? Yes. सो व्हेन यू आर डूइंग विद दिस, ये वाले क्वेश्चंस, ये जो प्रोनाउन का, ये प्रोनाउन का एरर है, ये नाउन का एरर नहीं है, ये प्रोनाउन का एरर है। ये वाले एरर्स आपके सीटी एग्जाम्स में काफी कॉमन है। ओके, दे आर वेरी कॉमन काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सिंपल है। आप ओके, डू यू नो व्हाट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन? नहीं आइडिया है कोई? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ओके। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब जो हम सब्जेक्ट की जगह पे, अच्छा आप लोग को पता है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। यस मैम। Okay, Yeah. so for example, if I say I have a pen, आई इज द सब्जेक्ट, very good, पेन इज द ऑब्जेक्ट। करेक्ट। तो अभी सब्जेक्ट क्या है? I, तो उसकी जगह हमने प्रोनाउन क्या यूज किया है? I. Can I say me have a pen? No. नो। No, because me is an objective pronoun. ठीक है, आप कैसे बोलोगे? For example, I will tell you, she gave me a book. Okay, if I say she gave me a book, इसमें she क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट।
वेरी गुड. गेव आपका मेन वर्ब है. हम्म? और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है. एक तो बुक ऑब्जेक्ट है, उसने मुझे क्या दिया? बुक दी. उसने किसको बुक दी? मुझे बुक दी. सो मी एंड बुक, दे आर ऑब्जेक्ट्स. ऑलराइट. सो आई कांट Yes. से शी गेव आई अ बुक. ऐसा बोल सकते हैं? नहीं. No. नो. तो आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन लगेगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगेगा. सो आई इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, मी इज एन sorry, yeah, I is a subject pronoun and me is an object pronoun. If I say he is a subject pronoun, but if I say him, Object pronoun. object pronoun. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि आप जब बात कर रहे हो, सो यहाँ पे you क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन. हम कंपेयर किसको कर रहे हैं? यू को ही से. Teacher. हाँ. हाँ. टीचर का कंपैरिजन हो रहा है कि टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन कौन बेटर टीचर है? यू बेटर टीचर है या ही बेटर टीचर है? You. Alright, so you are comparing you with he, He. not him. Clear one? Subject will be compared with subject and not with the object. Am I Okay. confusing you or am I making it clear? Clear. Clear. Making it Clear? clear. Alright, thank you. So ये समझेगा, याद रहेगा, कभी भी आप कंपैरिजन कर रहे हो तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होगा. ठीक है? Yes, ma'am. Now here comes the next one. कोई बात नहीं, दोनों आपस में बात करो, बोलो. You know, if you can come down with it. Ma'am, stock of lectures, is it the correct collective noun for lectures? पॉइंट लग रहा है वहाँ पे. या समवेयर देयर. सो क्या होना चाहिए फिर? Stock of lectures नहीं होना चाहिए. ओके, उसका कहना है शाइनी का कि शायद स्टॉक ऑफ लेक्चर्स नहीं होना चाहिए. Yes, yes, I agree. एग्री. होशियार हो गए यार तुम लोग. गलती पकड़ में आ रही है. एब्सोल्युटली करेक्ट. एरर यहाँ पे है, दो वी कैन नॉट मेक इट आउट कि अभी फिलहाल इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, बट यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. वी कैन नॉट से अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स. फिर हम बोलेंगे क्या? स्टॉक किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए. Goods. Yes. So what do we say? Series A of lectures. series of lectures. Very good. So this is also a collective noun question. ठीक है? एरर किसमें था? कलेक्टिव नाउन में. आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है बेटा कलेक्टिव नाउन से Yes, इम्पोर्टेंट ma'am. क्यों है. Yes, ma'am. Yes, वेरी yes. गुड. ओके. मैम, कंसर्न में ईडी नहीं लगना चाहिए. ईडी नहीं लगना चाहिए. क्यों? It is the biggest concern of the people now. मतलब, we are not talking about some person who is concerned about something. ओके. शायरी का कहना है वहाँ पे ईडी नहीं लगना चाहिए. क्या हुआ मैसी? कुछ समझ में आ रहा है? कोई गड़बड़ लगी है? Something is wrong, but what is? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या गड़बड़ है वो मैम, पकड़नी है. bringing back of normal functioning की जगह मतलब of shouldn't come there. देन वहाँ क्या आना चाहिए? Bringing back the normal functioning of the working bodies after demonetization is the biggest concern of the people now. Okay, she feels there are error between two areas. Okay, let's come down. एक तो पॉइंट क्लियर है कि बिगेस्ट कंसर्न नहीं होता, बिगेस्ट कंसर्न. चीज आप Concern समझे. होता. वेरी गुड. कंसर्न बोला तो इट इज मोर ऑफ अ वर्ब और एडजेक्टिव. बट बिगेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है. ठीक है? एडजेक्टिव किसके साथ लगेगा? नाउन के साथ लगेगा. So it cannot be concerned. It has to be concerned. So she's Concern. absolutely very correct. Biggest concern of the people now.
Now, coming down to this form, bringing back of normal functioning. Bringing back the normal functioning. Okay. Now, bringing back of normal functioning means कि हम normal function को वापस लेकर आ रहे हैं. That is how you add the prepositions. यहाँ पे काफी students mistake करते हैं. I mean, it's not only about you. Bringing back is basically something जिसको आप वापस लेके आ रहे हो. Okay, so we use certain prepositions over here. So that is where of is correct. Bringing back of normal functioning of the working world. Clear? Okay. Yes, ma'am. Okay, let's talk about this one. Ma'am, mothers-in-law. Yeah, you're all correct. यहाँ पे क्या होना चाहिए था? Mothers in law. तो apostrophe चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं. पक्का? Yes. Yes. Wow, bingo. ये वाला तो clear है कि भाई ये वाला question आया तो I know that my students are going to solve it. Very good. Okay. Ma'am, all right. All अच्छा right. उसमें problem लग रही है? All right is written as a single word with ALRIGHT. Okay, she feels that the problem is with ALRIGHT. Yes, yes. And also there should be the before Almighty. Okay, why do you want the before Almighty? Because before the words Almighty, God, Lord, we use the. You don't say I believe in the God. I think it's correct. In is correct. नहीं वो in नहीं बोल रही है बेटा, वो बोल रही है Almighty के पहले the लगना चाहिए. Means हाँ she's तो saying faith in the Almighty. I believe in God. In we use in to ओके उसका कहना है कि यहाँ पे शायद दल ऐड होना चाहिए. मैथी फील्स लाइक मैथी फील्स लाइक शी इज करेक्ट विद दिस एंड आप दोनों अग्री कर रहे हैं कि ऑल राइट में कोई इशू है. कुड यू एक्सप्लेन मी मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या ला रहे हो आप ऑल राइट का? all right is written as ALRIGHT, HT not ALL. with a space and right. Yeah. Okay. If I say let me think of a sentence where I can come down. Okay, there are two ways actually of writing all right. We also write ALRIGHT and we also write ALLRIGHT. All right. All right means when we are saying everything is right. Okay, it's a non-standard form, but yes, we do use ALRIGHT also. We also use ALLRIGHT. For example, if I say if it's all right if I join late, if it's all right if I join late, that means I'm talking about ALRIGHT. Okay. Yes. Yes. All right. So this is fair enough. You have no problems over here. But Siley is absolutely correct with the point, though she could not explain it well. कि आप Almighty use कर रहे हो तो उसके पहले आप article the लगा दो. Almighty means where we are saying one of its kind. There's only one person in such a way. तो जब कोई एक ही person है तो उसके लिए हम लगाते हैं article the. याद रहेगा ये? Yes, ma'am. Yes. But ma'am, while we talk to someone, we say that I believe in God, or we say I believe in the God.
We say I believe in God, but I'll say I believe in the God of happiness. Okay? Okay. When I say I believe in the God of happiness means I'm being very specific which kind of God I'm talking about. Okay. Okay. Okay? Yeah. Alright, here comes the next sentence. The flexibility of withdrawals. What's wrong with flexible? Uh, The flexible of withdrawal is seems something different to listen. no, wow. वो बोल रही सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है. We are talking about the ability of being the withdrawals to be flexible, so it will be the flexibility of withdrawals. But if I say you are flexible, तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे करेक्ट बोल रहे हो, बिंदास बोलो, तुम्हारा आंसर भी करेक्ट है. If I say you are flexible, I'm using an adjective. Okay? Means you can Yes. adjust, you're capable of bending. So I'll say you are flexible. I'll say this plastic is flexible. That means it can be bent in any particular direction. But here when I say the dash, हमने एक तो article लगाया है the. So, और फिर हम बोल रहे हैं ऑफ विड्रॉल्स, तो यहाँ पे हमें नाउन चाहिए, एडजेक्टिव नहीं. एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ withdrawals. Absolutely correct. You're absolutely correct on that. I'm just explaining it you more in detail कि हम flexibility क्यों लगा रहे हैं, because हमें noun चाहिए. yes, ma'am. ठीक है. सो एग्जाम में हम क्या करेंगे, इस तरह के एरर्स देंगे कि नाउन की जगह एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव की जगह वर्ब यूज कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल. वेरी गुड. I'm happy with this one. Quite good. Okay, comes the next one. Men should be there, ma'am. Then men athletes. Okay, quite a quick one on that. Men क्यों चाहिए? Uh, plural. And अच्छा, यहाँ पे फार है, फार चलेगा? हाँ चलेगा. Okay, Women athletes have performed far better than men athletes in this sports season. इन लगाना है? No. You're absolutely correct. It has to be women, and it has to be compared with men athletes, because we are talking about athletes, so there are women and men. They both has to be plural. Absolutely correct. Wow, yeah, you two are doing good. Quite good. Okay. अब बताओ, मेरे पास भी क्वेश्चन है, आप बताओ. My uncle. अच्छा, द अंकल ऑफ माइन की जगह माय अंकल. My uncle. उससे फर्क क्या पड़ेगा? I mean, why do you want to change it? Doesn't sound good again. Yes, ma'am. Ma'am, Hmm? advice is always useful. नहीं नहीं, मैं बेकार एडवाइस भी दे सकती हूँ. That's very sweet one. मुझे ये बोली मैम एडवाइस हमेशा यूजफुल ही होती है. So why they have used useful? I'm making it very careful. Okay, उसका कहना है शायद यहाँ पे माय अंकल होना चाहिए.
अदरवाइज कोई एरर नहीं है। मतलब या तो मतलब वहाँ पे माय अंकल आएगा और फिर बाकी बी सी डी में तो कुछ लग नहीं रहा एरर। या तो वो एरर है या तो फिर कोई एरर नहीं है. ओके, क्वाइट गुड. एन अंकल ऑफ माइन। Okay, you are absolutely correct. You can either say my uncle. That's absolutely perfect to say. मेरे uncle. Okay, now why? That is absolutely right statement. एग्जाम में जानबूझ के आपको ऐसा कुछ देंगे, तो मुझे ये बताओ द की जगह एन क्यों यूज किया, क्या फर्क पड़ा? And when we say and, it is one of, it refers to one of my uncles. वेरी गुड, वेरी गुड. Article is also there. हाँ, तो दोनों आर्टिकल है ना बेटा, द भी हाँ. आर्टिकल है और एन भी Yeah, आर्टिकल है. and And big. when we say the uncle, then we say my only uncle. Okay, you can also say very specific kind of uncle, Yes. right? So we are saying an uncle of mine is a stand-up comedian. मतलब मेरे एक uncle है जो एक stand-up comedian है. So that is what the meaning interprets. So that is why अभी ये बहुत ही बेकार वाला error था, ये जबरदस्ती का error है, ठीक है? So you are absolutely correct if you come down with my uncle. अगर exam में आपने 8 tick किया, so you are getting the mark on that. Absolutely correct. Okay. Ma'am, the word first will not be used 3 times. Okay, तो फिर sentence कैसे होगा? Explorers first reached South Pole in 1911, then climbed the Mount Everest in 1953. नहीं. Then लगा दिया तो उसका meaning change हो जाएगा. Okay. Then नहीं लगेगा, फिर सिर्फ कॉमा के बाद सीधा climb the Mount Everest in 1953 and set foot on the moon in 1969. Okay, but उससे फर्क क्या पड़ा अगर मैंने first लगाया भी तो है और निकाल भी दिया तो? जब मतलब the first word which is the first which comes after explorers, it is saying that all these things are Done for the first time. done for the first time. Okay भाई, इसका कहना है कि first ही आना चाहिए. Yes. और कोई error लग रहा है? Doesn't seem like, है ना? First का error लग रहा है. सिर्फ फर्स्ट का ही एरर लग रहा है. पक्का? सोच लो. 10 करोड़ का सवाल नहीं है, पर फिर भी सोच लो. Explorers first reach South. मैम साउथ पोल के आगे द आएगा. और अब कुछ लाइन पर आ रहे हो. ऐसा द क्यों लगाना है यहाँ पे? साउथ पोल एक ही है. एक ही है. तो फिर फाइनली क्या करना है? फर्स्ट भी निकालना है और दो लगाना है. Explorers first reached the South Pole in 1911, comma, climbed the Mount Everest in 1953, comma, and set foot on the moon in 1969. Okay, then now it feels you're correct. Yes, Yes. ma'am. Okay, चलो देखते हैं. अच्छा, एक पॉइंट तो करेक्ट निकला. क्या करेक्ट निकला? साउथ South पोल Pole. के, हाँ, द साउथ पोल लगाया. एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. हमने द इसलिए लगाया बिकॉज it is only one of its kind, and anything which is unique, one. And as far as these geographical, points are considered, we generally put the equator, the Tropic of Cancer, right? So we are saying the South Pole, the North Pole. All right. Ma'am, Mount then, Everest के पहले the क्यों हटाया? Why did we remove the here? एक ही तो Mount Everest है. Okay. The reason is that we use article the
with ranges of mountain. For example, we say the Himalayas. Okay, ranges of mountains means एक single mountain के लिए use नहीं होता है, वो पहाड़ों की range होनी चाहिए. We say the Alps. Again, it's a Yeah. range. Okay. Okay, if it's only one mountain, we do not use article the in English. Alright, याद रहेगा क्या बोला हमने कि हम geographical points के साथ article use करते हैं. We use article the with the ranges of mountain, but we do not use article the with only one mountain. ठीक है, तो वहां पे Okay. जब हमने माउंट एवरेस्ट बोला तो वो एक माउंटेन है, इंडिविजुअल माउंटेन है, तो वहां आर्टिकल द यूज नहीं करते. नहीं करेंगे. Okay, now my question is, why do we say the West Indies? The West Indies क्यों बोलते हैं? West Indies is a group of island. Okay, it is basically an archipelago of island. Archipelago is a collective noun for island. Okay, Yes, archipelago ma'am. means it is not one land. There are too many lands which are coming down in collection, and that is why we use the article the with West Indies. For example, I'll say the Andaman and Nicobar Islands. ठीक है, याद रहेगा पॉइंट. हमने Yes, क्या ma'am. बोला, Yes. हम रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के साथ यूज करते हैं, हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ यूज करते हैं. एक सिंगल आइलैंड होगा तो आप आर्टिकल द यूज नहीं करोगे. ठीक है, याद रहेंगे ये पॉइंट्स. Yes, ऑलराइट, ma'am. Yes. कमिंग बैक टू द वर्ड फर्स्ट. फर्स्ट आप निकाल भी दो तो भी सेंटेंस सेम रहेगा, लगा रहने दोगे तो भी चलेगा. दिस इज टू मेंटेन पैरेललिज्म. ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई से she loves to sing and to dance. Okay, I'll repeat. She loves to sing and to dance. तो मैंने दो बार to लगाया, या तो हम यहाँ सेकेंड वाला to हटा सकते हैं, and I can say she loves to sing and And Done. dance. dance. So that is also correct. But if I say to as an infinitive verb before, that is also correct. So this is just to maintain, if I'm trying to maintain a parallelism, and if I'm using first, that is also fine. If you want to remove it, that's also okay. So उससे कोई major difference नहीं आ रहा था, right? Major points कहाँ थे जहाँ आपको South Pole के साथ article the लगाना था और Mount Everest के साथ हमें article the निकाल देना था. ओके, तुम लोग जब बुक्स ओपन करोगे तो उसमें आर्टिकल के ऊपर तुम्हारे इसमें रूल्स दिए हुए होंगे. ऑलराइट, अभी तो हम साथ में डिस्कस करते चल रहे हैं, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग इन टिपिकल मैनर, वी आर डिस्कसिंग इट विद द एग्जांपल्स. तो एक बार तुम लोग वो आर्टिकल के रूल्स पढ़ लेना आज. ठीक है, Sure. Yes, ma'am. ऑलराइट. Experiences. ओके, उसका कहना एक्सपीरियंसेस होना चाहिए. एक्सपीरियंसेस काउंटेबल है. Yes, ma'am. Yes. We can say I have experienced it for 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. पर आप 5 टाइम्स काउंट कर रहे हो. आपने जो सेंटेंस दिया उसमें आप काउंट क्या कर रहे हो, टाइम्स काउंट कर रहे हो. एक्सपीरियंस Experience उतने टाइम हुआ है ना मैम. Okay, all right, so you all feel it should be experiences. Let's check. Ta-da! Correct. You both are correct. Yes, you both are correct. Experiences, when it comes down, it defines the way you are speaking it. मतलब आप किस वे में बोल रहे हो. जैसे उस दिन हमने हेयर का एग्जांपल लिया था. The experience when you're talking about for example the event. ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या कहना है कि एज अ पायलट उसने बहुत सारे इवेंट्स को देखे होंगे. ऑलराइट,
So in that case, experience is countable. And experience is also uncountable, especially when you're talking about you have done some kind of a job. ठीक है, यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि एज अ पायलट उसने बहुत सारे किस्से या हादसे हैंडल किए, राइट? And that is why we are saying a lot of horrifying experiences. But if I say or talk about as a job, so I will call it as experience. So in that case, it would be uncountable. तो जैसे हमने हेयर के केस में कैसे उस दिन किया था कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है? Yes, ma'am. So I cannot say he has 10 years of experiences in law. In that case, what would I say? He has 10 years of Experience. experience in law. Clear है ये चीज? तो ये थोड़ा सा Yes. ध्यान रखना. Very good. Okay, what about this one? Teeth. हाँ, ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है. क्यों, टूथ्स में क्या प्रॉब्लम है? Tooth singular होता है. Tooth का plural teeth होता है. पक्का टूथ हाँ. बोला तो क्या प्रॉब्लम है? No, ma'am. We don't say tooth. Very good, you're absolutely correct. We say tooth which as a singular and we use teeth as the plural. ये एकदम बच्चों वाला है, but कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको 3 or 4 लाइंस का स्टेटमेंट होता है and then we miss that. So this was just to give you an idea. Very good, quite nice. Okay. And what is assailant? As assailant. Means a person who's with you, your assistant or your helper. Okay, ma'am. Basically not helper, जिसको आप opposite में attack करते हो. I'm sorry. He knocked out the 4 teeth of his assailant with a single punch, means your opponent. Yes, ma'am. Were devastated. अच्छा, उसका कह रहा है सर यहाँ पे वर होना चाहिए. रीजन क्या लगा रहे हो, मतलब टाउन्स के लिए? Plural है. प्लूरल है. ओके, इसका कहना है शायद वर होना चाहिए. Yes. प्लूरल के साथ. प्लूरल लगना चाहिए. थड़ा. क्या हुआ, क्या गड़बड़ होगी? ओके, दिस इज अ कॉमन स्पोकन इंग्लिश एरर. ऑलराइट, कोई भी चीज एक के बाद एक खराब हो रही है. यहाँ पे हमारा मतलब क्या था यहाँ पे इस सेंटेंस में कि एक के बाद एक जो है वो टाउन फिनिश हो रहा है. ऑलराइट, so when we are using something as a combination here, ये हमेशा सिंगुलर में होता है. टाउन्स आफ्टर टाउन्स मतलब बहुत सारे टाउन्स हो रहे हैं, फिर बहुत सारे टाउन्स हो रहे हैं, लेकिन हमें बोलना क्या है, एक के बाद एक. फॉर एग्जाम्पल, आई विल से डे आफ्टर डे. वी डोंट से डेज आफ्टर डेज. Yes. Yes, ओके, ma'am. so हमेशा याद रखना कि it should be town after towns. When there are two nouns and there's a preposition, we generally take it as a singular. याद रहेगा ये? Yes. Yes. Very good. Rupee. Rupee. क्यों रूपी, क्यों? A half rupee. साथ में वन भी तो है. I'm पहले ही also giving you मेंशन किया one. है कि कितना है. So मैं कैसे बोलूँ? I have two students or I have two students. Two student. Because you have mentioned earlier that you have two. No. Two students आएगा. हाँ, two students आएगा. क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ I have 5 chocolate? No. No, no, no. You'll say I have 5 chocolates. Chocolates. But here it is a half rupee. Okay, it is joined by and
एंड वी ऑल्सो हैव वन, तो वन से तो ज्यादा है, मतलब मेरे पास कितनी रुपी है? 1.5 हम्म। rupee. तो वन से ज्यादा है तो हमने रुपीस लगाना चाहिए ना? नहीं? ओके, तुम लोग क्लोजर हो, थोड़ा और सोचो, यू ऑलमोस्ट देयर। He gave me 1.5 rupee. He gave me, 1.5 rupee. okay, I think you're removing article a. Yes. ओके, उसका कहना है शायद अ निकलना चाहिए। ऑलराइट, लेट मी शो यू द आंसर, थोड़ा सा ट्रिकी है, यू आर क्लोजर। 1.5 rupees. So you're correct that you cannot put rupees over here, but then even the statement would change. Okay, ये अगेन स्पोकन इंग्लिश का एरर है। क्या होता है, हम ऐसे ही बोलते हैं 1.5 रुपी, राइट? बट हाउ डू वी वांट इट टू कम डाउन, लाइक कभी भी अगर हम ये इंटीजर्स में, वैल्यूज में या इसमें बात कर रहे हैं तो हम उसको लास्ट में लेते हैं। सो विल से ही गेव मी 1 रुपी एंड अ हाफ। Half. अगर क्वार्टर होता तो भी हम ऐसे बोलते हैं 1 रुपी एंड अ क्वार्टर। Quarter. ओके, क्लियर विद दिस वन? ये सिर्फ Yes, एक ma'am. थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग है। सो यू आर क्लोजर, द ओनली थिंग वाज पोजीशन उसको कैसे करना है। ओके, Who will inherit the earth? who will, Inherit the earth. मतलब वहाँ पे कुछ स्पेलिंग चेंज कर रहे हो क्या? Shall के जगह पे will लगना है. ओके, शैल की जगह विल कर रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब डिफरेंस क्या होगा? मैम शल ही नहीं आएगा वहाँ पे. अच्छा, तो मतलब आपका कहना है who inherit the earth Yes. डायरेक्टली आ जाएगा। Yes. ओके, इस सेंटेंस का मतलब समझा सकते हो? According to the Bible, the person who is humble and मीक। meek, हम्म। means who is gentle and humble, हम्म, वो क्या करेगा? Inherit the अर्थ earth. को इनहेरिट करेगा। इनहेरिट मींस टेक ओवर करना, है ना, आगे जाके हम बोलते हैं ना इनहेरिट द प्रॉपर्टी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी इनको मिलेगी, तो अर्थ को वो रूल करेगा या अर्थ उसकी होगी। So then I'm saying, according to the Bible, it is meek and humble who shall inherit the earth. So this is correct. Who shall means आगे जाके वो inherit कर सकता है। करेगा. Okay. अच्छा, shall और will का डिफरेंस क्या है कि you do use sometimes shall and will। फ्यूचर में कोई चीज ऐसी होगी, शायद है, तो we do use shall, we do not intend to use will in that case, तो वो चलता है। तो और कोई एरर लग रहा है? No error. नो एरर, ओके, लेट्स चेक। Oh. ओह, एरर तो है, तो क्या एरर है? मैम अच्छा, यहाँ पे, हाँ आंसर के पहले वाला सेंटेंस एक बार बताओ ना. श्योर। Okay. हमने और कुछ चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ वहां पे आर्टिकल द लगाया है। Okay. तो द क्यों लगाया? ओके, हम क्या बोल रहे हैं, एक ही पर्सन है या एक ही वो इंसान है या एक ही ऐसी कोई चीज है जो कि मीक भी होगी और हम्बल भी होगी। ओके, दैट मीन्स द पर्सन हु इज मीक एंड हम्बल, both. So there's only one kind of a person who will have these kind of things, and that is why we are adding the article the. The. Okay, if I say
the rich and the poor. So we are talking about two different categories, right? जो rich है और जो poor है. Okay. If I say the captain and the wicket keeper, तो यहाँ Two पे कितने? different things. Two different things. Okay. So Yeah. one person may be who is a captain and the other is a wicket keeper. Now if I say the captain and wicket keeper, so when now I'm using only one article. What did I say? The captain and wicket keeper. ठीक है. तो जब आप आर्टिकल द लगा रहे हो सिर्फ दो एडजेक्टिव्स के पहले या दो नाउन के पहले, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही पर्सन है जो कैप्टन भी है और विकेट कीपर भी है. क्लियर हो रहा है? कुछ कोई आइडिया मिला है? If I say Yes. the Yes. captain and the wicket keeper, I'm talking about two different people. But if I say the captain and wicket keeper, I'm talking only about one One person. person having two Yeah, qualities. two different roles or qualities to do with. Okay? Yes. All right. Comes the next sentence. कोई और नाम समझा नहीं था तो लाइक गब्बर सिंह. कुछ लग रहा है? कोई एरर आ रहा है समझ में? अब द की जगह ए आएगा. यहाँ पे ना इन हाँ. 300 क्यों ऐसा क्यों? I think अच्छा कुछ नहीं लग क्यों रहा आएगा. है? क्यों चाहिए वहां पे? मतलब कोई एरर नहीं है या वहां पे द भी नहीं चाहिए भी नहीं चाहिए? मतलब आपका ध क्या भी कहना है? नहीं मतलब चाहिए अ भी नहीं चाहिए. चाहिए. अ चाहिए. अच्छा, उस साइली का कहना है उसे चाहिए, उसका कहना है कि वहां पे ना चाहिए ना द चाहिए. पर प्रॉब्लम क्या है? आपको द की जगह क्यों चाहिए? क्योंकि 300 ईयर ओल्ड हाउस को हम मतलब वी आर नॉट showing that the 300-year-old house. So, हम्म. अच्छा, इसको कोई भी आर्टिकल क्यों नहीं चाहिए? आप क्यों बोल रहे हो द भी नहीं चाहिए भी नहीं चाहिए? अच्छा, let's see the answer and I'll explain it. उसमें दो तीन पॉइंट्स है which I would like to talk. Society is absolutely correct. हमें द नहीं चाहिए, हमें वहां पे चाहिए. चाहिए. सेंटेंस ऐसा है कि गब्बर सिंह एक घर में रहता है. अगर आप ये सब निकाल दो, 300 year old, how would you say गब्बर सिंह lived in a house? वो एक घर में रहता था, राइट? अब वो घर कैसा था? 300-year-old. 300 year old, right? So that is why we are saying he lived in a 300 year old house. क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. आर्टिकल इसलिए चाहिए बिकॉज विद द नाउन है, सो वी डू प्रेफर टू हैव आर्टिकल्स. इफ इट्स अ काउंटेबल नाउन वी नीड आर्टिकल. ओके, Yeah. ऑलराइट. ओके, व्हाट अबाउट दिस सेंटेंस? Ma'am, wise is adjective and strength is noun. ओके, So either the both should be adjectives or both should be nouns. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अब क्या करें? Change one of them. तो वाइज इज बेटर देन स्ट्रॉन्ग. ओके, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट.
जब हम Wisdom. कंपेयर कर रहे हैं, करेक्ट, कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे नाउन है, तो कंपैरिजन मैच नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं है, पैरेललिज्म मेंटेन नहीं है. So she's absolutely correct with that. But since we're comparing it, we'll prefer to have it as a noun form, so that will give you a better way of expressing it rather than saying wise is better than strong. So we're saying wisdom is better than Strength. strength. You're absolutely correct. Quite good. Okay. There are two sentences. मैम ध नहीं आएगा क्योंकि साउथ पहले ही मतलब एक सिंगल है डायरेक्शन. आपने तो द साउथ बोला था. अच्छा, उसका कहना है शायद यहाँ पे द नहीं आना चाहिए, तो शी वांट्स टू से द सेंटेंस एज वी नीड टू वॉक साउथ, राइट? टू फिर द नेक्स्ट में साउथ. We need to walk to the south, maybe. maybe something like that. Okay, and what about the second one? क्या हुआ, क्या लग रहा है? We need to walk towards the south. We need to walk towards the south. Okay, and the second sentence. Okay, I'll come down to the answer. You're absolutely correct. If I'm using the first sentence like we need to walk, so either I'll say we need to walk south, जो उसका पहला आंसर था. She was correct in that case कि मैम शायद दो की जरूरत नहीं है. या तो अगर आप दो लगा रहे हैं तो आप दोनों करेक्ट है. Either I should say we need to walk to the south, or I need to say we need to walk towards the south. Okay, हमें कोई preposition लगेगा अगर हम वहाँ पे article use कर रहे हैं. So you both are correct. Either we need the preposition or we need no article. As far as second sentence is concerned, हम एक particular specific way में दे रहे हैं. That is why our house is in the north. That's absolutely correct. When we are using as a direction in a specific way, we do add article the. Clear हुआ ये? Yes, ma'am. Okay. So you were correct. Either I can say we need to walk to the south. Either I can say we need to walk towards the south. So when we're using something like this, it's fair enough. Quite good. Okay. The type of man. अगर दिस लगाया तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा? आगे एक्सप्लेन किया ही है कि उसको किस तरह के लोग नहीं पसंद है. अगर मैंने दिस टाइप बोला तो मतलब मुझे ये वाले टाइप के पसंद नहीं है. For example, I'll say I don't like this kind of book या people या whatever. People बोला तो खैर मुझे plural use करना पड़ेगा. But this means ये specific. So I can also use the, even if it is this, it is fair enough. This type of a person. Okay, she says it should be person. Why? What's wrong with man?
मैन बहुत जेंडर स्पेसिफिक हो रहा है. बड़े बायो ही सो रहे हैं हम लोग. Okay, let me come down to the answer. So your closer, it should be he does not like this type of man. Where we are trying to tell you that हम ऐसे स्पेसिफिक वे में कह रहे हैं तो फिर उसको और स्पेसिफिक मैन नहीं कर सकते. ये एक आदमी पसंद नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम. क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं जैसे तुमने पर्सन लगाया. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से कि दिस टाइप ऑफ पीपल. सो इफ आई एम यूजिंग पीपल, अच्छा इस प्रॉब्लम क्या है इफ आई से दिस टाइप ऑफ पीपल. पीपल क्या है, प्लूरल है. सो व्हाट वुड आई से, दीस टाइप ऑफ पीपल, राइट. दीस टाइप्स ऑफ पीपल व्हेन आई एम सेइंग इन दिस केस. तो यहाँ पे हम उसको और स्पेसिफिक मैन नहीं करेंगे. क्लियर ऑन दैट? Yes. But ma'am, if there is, if there would be the word person, then would be correct. अच्छा अगर बुक रखी तो This type of book. or would you say this type नहीं of आएगा. work? Correct, very good. All right. Remains नहीं आएगा. तो उसकी जगह क्या यूज करना है या कुछ भी नहीं लगाना है? उसकी जगह कुछ यूज करना है पर वो नहीं पता मुझे क्या यूज करना है. ओके, उसका कहना है शायद रिमेन्स में कुछ गड़बड़ है, पर क्या गड़बड़ है, या समथिंग शी वांट समथिंग डिफरेंट वर्ड ओवर देयर. Okay, let's come down to the sentence. Okay, I'll just show you the first sentence. क्या था? He always remains in temper these days. And हमने किया क्या है? Remains in a temper. Okay. हाँ, ये एक फ्रेज की तरह यूज करते हैं. इंग्लिश में कुछ चीजों में हम आर्टिकल क्यों लगाते हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दे सकती. फॉर एग्जाम्पल आई से आई हैव अ कोल्ड, राइट. सो आई से शी इज इन अ बैड मूड, right. So there's certain things in which we do use as a phrase, as a article. तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? He always remains in a temper these days. मतलब एकदम खराब मूड में रहता है. So that's what we are trying to forget on this. Alright? ये improve होगा बेटा आपकी reading से. The more you read books or the more you read the articles, अपने आप confidence आएगा इसमें. Alright? Yes, ma'am. Okay. The next one. So, कुछ आइडिया लग रहा है? Okay, do you want instead of failures to be failure? मतलब एस निकाल दें. No. पर हमने एक लगाया ना. In my opinion, it is not the failures. अच्छा तो failures रखना है. S लग रहा है मतलब we have to keep the plural form, right? Yes. Okay. तो और कोई error?
यहाँ सपोर्ट्स किया तो No. नहीं, क्या यार सारे मेरे आइडिया रिजेक्ट कर रहे हो। अच्छा यहाँ LWSE कर देते हैं। नहीं. नहीं, नहीं. अरे सोच लो एक बार। No. नहीं, ओके। तो कोई एरर मिल रहा है? मैम हैव करेक्ट है क्या वहाँ पे? ओके, अ गुड वन। ये हैव किसके लिए लगाया है? ऑलराइट, ये जो इट है ये फेलियर्स के लिए नहीं है। फेलियर्स प्लूरल फॉर्म है और उसके लिए हमने ये हैव यूज किया है। फेलियर्स हैव मेड हिम। ओके, तो ये हैव किसके लिए लगाया है हमने? फेलियर्स के लिए, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हैव बराबर है। तो और कोई एरर लग रहा है? No. सो आई थिंक प्रोबेबली वाला कमिंग नाम की कोई एरर नहीं है, या है? ओके, लेट मी शो यू द आंसर। एरर है। एरर क्या है? Made him lose the heart. The is wrong over here. याद है हमने एक लास्ट सेंटेंस किया था टेम्पर वाला, वो भी एक फ्रेज है। ठीक है, हम कैसे बोलते हैं? डोंट लूज हार्ट या डोंट लूज द हार्ट? Don't lose heart. डोंट लूज हार्ट मीन्स होप्स मत छोड़ो। ऑलराइट, so that is how the phrase comes down। तो यहाँ पे वो ऐसा फ्रेज यूज किया है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं स्पेसिफिक दिल मत छोड़ो। Alright, it's just a phrase. So in certain phrases you need to understand, कुछ में हम आर्टिकल लगाते हैं कुछ में नहीं लगाते। तो ये बहुत ऐसा ही क्वेश्चन था, ये जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है? If we say, in my opinion, it is not the failures that made him lose heart, but the lack of emotional support. Okay, now when I say that made him, it goes into a simple past tense। Okay, for example if I say I graduated and I have graduated, क्या फर्क है दोनों में? I graduated मतलब पहले हो गया है, and I have graduated मतलब अभी. ओके, मेरे ग्रैंडफादर भी बोलेंगे आई हैव ग्रेजुएटेड, अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है तो वो ऐसा क्यों बोलेंगे? ओके, इफ आई से इंडिया हैज वन द मैच एंड इंडिया वन द मैच, okay, anything which comes down as your achievement, right, as your appreciation kind of thing, उसके लिए हम present perfect tense यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे तुमने अभी बोला कि कोई चीज अभी अभी हुई है, तो हम क्या यूज करते हैं? हैव। आई हैव ग्रेजुएटेड, आपने मुझे क्या बोला? आपने अभी अभी ग्रेजुएट किया है। So that is also one concept where we use present perfect. We also use present perfect when we want to tell something which is of a very high importance. All right. For Okay. example, I have participated in various activities in colleges. मान लो आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते हो, राइट, और आप वहाँ पे बोलते हो, तो आप इन केसेस को, बिकॉज ये आपके अचीवमेंट्स हैं, उनको हम सिंपल पास्ट में नहीं बोलते हैं, हम उनको प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हैं। दैट्स वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग, समथिंग विच हैज रिसेंटली हैपेंड, कोई चीज अभी अभी हुई है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। Yes, ma'am. ओके, क्लियर? Yes. ऑलराइट, आई होप यू ऑल आर नॉट टायर्ड। No, ma'am. गुड, Yes. वेरी गुड। ए टायर्ड? यस, क्या रे No. नालायक। No, matlab we are not tired. हाँ यार ठीक है, आई लव लाइक बोलिंग, नो प्रॉब्लम्स। चलो ये बताओ,
कुछ एरर मिल रहा है? अच्छा, यहाँ पे बी विजिटेड क्यों लिखा है? ये कौन सा टेंस हुआ? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट। हाँ, तो हम एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं, तो वी हैव विजिटेड मतलब इट्स काइंड ऑफ हमने विजिट किया है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं हमने उस वक्त विजिट किया जब हम बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहे थे, सो वी आर गोइंग इन सिंपल पास्ट टेंस। द यूनाइटेड स्टेट्स बराबर है। यस। ओके, तो यहाँ द नहीं लगना चाहिए बिटवीन द कैनेडा। नो। ऑलराइट, तो और कोई एरर लग रहा है? While we were crossing or while we crossed? while we crossed. Okay, तो उसका कहना है शायद while we crossed। क्रॉस कर चुके थे, तब देखा। पास्ट था ना, तब देखा था। ओके, उसका कहना है शायद क्रॉस्ड होना चाहिए। 50%. Okay, let's come down to the answer. क्या हुआ यहाँ पे? Okay, here it's again the problem of article the. ओके, शश्वत हमने बोला था कि हम पर्टिकुलर केसेस में कहाँ आर्टिकल्स लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं, ये उसका एक ऑफ द रूल, वन ऑफ द रूल है। We visited Niagara Falls and we don't say we visited the Niagara Falls. Okay. मतलब Second नायग्रा important thing. फॉल्स तो एक ही है। नहीं, ऐसे तो एक ही है, but it is known as it's a basically combination. It's a group of 3 waterfalls which come down over there. So generally जब ये falls वगैरह है तो we avoid using article the. लेकिन रिवर्स होंगे तो आप आर्टिकल द लगाओगे। इंग्लिश ऐसी ही है बेटा, वैसे इंग्लिश क्या हर लैंग्वेज ऐसी ही है। हर लैंग्वेज में उसका अपना एक फ्लो होगा, एक अपना नो वे होगा। तो फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज आस्क माय स्टूडेंट्स, टेक समथिंग लाइक दिस। इन इंग्लिश आई विल से विंडो इज ओपन, डोर इज ओपन। ओके, हिंदी में कैसे बोलोगे? खिड़की खुली है, दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला है। क्यों भाई, अब वो खुला क्यों है और ये खुली क्यों है? चलिए एक बार हम मान भी लेते हैं कि आपने उसको बोला वो फेमिनिन जेंडर है, ये मेल जेंडर है। ऑलराइट, सो नाउ इफ आई से डोर इज क्लोज्ड, विंडो इज क्लोज्ड, आप क्या बोलोगे? दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है। तो अब खिड़की बंदी क्यों नहीं है? Alright, so every language has its own kind of way you speak and it has its own justification. So there will be some exceptions to what you come down with. Okay, so when you're learning language, don't learn it with rules. ये हम faculties का ही problem है बेटा, इसमें आपकी गलती नहीं है। हम आपको language rules के साथ सिखाते हैं। ये आया तो बेटा ये रूल लगाना है, ये आया तो ये रूल लगाना है। It's language. And specifically when we come down to English as language, it has many things which is adapted from various different languages. Okay, so यहाँ से adopt किया, वहाँ से adopt किया है. So there are many things. Second important thing, you see the pronunciations. You have a verb, you know, you write something, you pronounce something. हम लिखते हैं HONOUR, पर हम pronounce क्या कहते हैं उसको? R. If I say HOUR, we'll say it as R. We don't say hour. Right? So if I say Yes. HONOUR, that is honor. Honor. We're not saying, yeah, we're not saying honor. Best part you come down with UMBRELLA. How do you pronounce? Umbrella. Umbrella. Okay? But if I say UTENSIL, Utensil.
आना अब बताओ, वहां पे अम्ब्रेला है, यहाँ पे यूटेंसिल है, तो या तो उसको भी यूम्ब्रेला बोलो, right? So, our language, when we talk about English, it is more of a phonetic language. And as far as the rules and regulations are concerned, थोड़े rules सिर्फ इतना समझो बेटा कि rules जहाँ पे help कर सकते हैं, जो short rules हैं, okay? So we'll try to keep practicing more. I'll give you more these kinds of questions. हम इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे. तो अभी जैसे हम थोड़े क्वेश्चंस अभी ले रहे हैं, फिर बीच में कुछ एडजेक्टिव प्रोनाउंस के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, टेंसेस के लेंगे, अगेन फिर कुछ मिक्स फॉर्म में लेंगे. सो इट विल हेल्प यू आउट इन ट्राइंग विद इट, गेटिंग विद द होल्ड ऑफ इट और द नाइक ऑफ इट. कुछ क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Okay, so I'll stop here for the day. We'll continue with more of this. आप लोग घर पे आपकी जो बुक्स हैं बेटा, उस पे से ग्रामर के थोड़े रूल्स पढ़ लेना, तो तुम्हारे लिए इजी होगा नेक्स्ट सेशन में. और क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग ऑल द रूल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. I mean, to be honest, rather, if I say I'm not like that, we are not taking all the rules which are given in the books. I'm trying to take those kinds of questions more, which we see a lot coming in your exam. ठीक है, तो हो सकता है हमने सारे रूल्स नहीं करे, हो सकता है क्या राधा हम कवर ही नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई एक आधा पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा बुक में पढ़ने के बाद. तो एक बार पढ़ लेना. इफ यू हैव एनी डाउट विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट सेशन. Yes, ma'am. ओके, ऑलराइट. Yes. सो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, वट एवर वो कैप्स वी डिड. एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं, हमने क्या क्या किया वो कैप में आज. Abhor. अबॉर, वेरी गुड. व्हाट वाज अबॉर? Hate. Hate. हेट. हमने बोला अबॉर नहीं झेल सकते, दैट इज अबॉर. इट इज हेट. Then we also did when you cannot satisfy someone. Uh, uh, Satisfy के लिए. appease. 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 Very Appease. good. Appease. We did the word as appease. और क्या किया? Brazen. Reason. हाँ. Brazen. And that Truthful. was Bold. very good. Truthful, bold. और बोलो. Arcane. Very Secret. good. Secret. Arcane is secret. Very nice. Alacrity. Cool. Alacrity. Excited. Excited. Very nice. दो word और थे. Avarice. 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 Yeah. Avarice. That Extreme was greed. greed. Very good. और एक hatred का opposite क्या था? Friendly वाला था. हाँ, करेक्ट. फ्रेंडली वाला था. Amiable. Very good. Amiable. Available. Amiable. Amiable. Right? Very good. So I hope you all enjoyed the session. Yes, ma'am. Very good. देखो यहाँ बोलना बहुत Yes. जरूरी है. आई शाबाश. Okay. All right. Then see you in the next session. Next week rather. Okay. Yes, ma'am. All right. Take care. Bye. Yes. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye.